So hi all, good evening everyone. Yes, बहुत ही बढ़िया आप सब यहाँ पे हैं. And today we are going to start with some new things. Let me start my virtual box. If I'm audible, then just reply in the YouTube chat section that I'm audible. Okay. So I'm just starting this Fedora machine. Good. So hopefully you all are doing good. So बहुत अच्छा. By the way, today we are going to talk about some more basics command and then shell programming. Okay, shell in Linux. So few basic commands, right? Then shell in Linux. All right. So let me just wait for this Fedora machine to come up. All right, it's booting, by the way. So someday we'll discuss what the hell is going on here. I mean, in the booting section. All right. So just waiting. Okay. So meanwhile, you all can try to submit your answer on the that blog we have given. So you have to submit your answer on GitHub and then comment that GitHub link here. This one, right? I can see 7 comments right now. Okay, so I believe yes. I'm logging to the root account again. Okay, so all right. Meanwhile, if you maybe I just forget to answer the questions. Okay, if you have question related to the previous session, so we're changing a rule, right? First of all, I'll take questions from you guys in the beginning of session and then I'll answer it, then we proceed. So because I think it's not really easy to manage everything. So if you have any question regarding the last session, because I believe couple of people have seen that question is not being answered. So you have any question, please let me know regarding the last session or maybe the first and second. So any questions you have as per the session 1 or session 2, you can type your question in the chat, YouTube chat. I'm just giving you a time of 1 minute, right? तो आपके पास 1 मिनट का समय है और आप जिसके पास भी जो भी क्वेश्चंस हो वो टाइप कर दे. ओके. So Manan is asking, echo is coming, is it? Echo, guys, echo है क्या आवाज में? So first question by Piyush, boot time section में फेल होने के बाद भी चीज कैसे चल जाती है कुछ? Yeah, exception handling is there, right?
एक्सेप्शन हैंडलिंग है पीयूष उसमें, इसलिए. The second question by difference between standard user and admin user, not the basic difference. So मनन, इस क्वेश्चन का आंसर अभी सारे एक्सप्लेनेशन के साथ तो नहीं दे सकता, बट बेसिक डिफरेंस अगर एक अच्छे आंसर के एक्सपेक्टेशन में आप सोचो तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एडमिन यूज़र है और जो नॉन एडमिन यूज़र है, दैट मीन्स एडमिन एंड नॉन एडमिन, इनके सिस्टम कॉल्स में फ़र्क होता है, राइट. इसका मतलब नॉन एडमिन यूज़र भी वही सारे काम अटेम्प्ट करेगा, लेकिन जो कर्नल है, कर्नल उन सिस्टम कॉल को टैग करके रखता है जो एडमिन यूज़र एग्जीक्यूट कर पाएगा और बाकी लोग नहीं कर पाएंगे. सिस्टम कॉल का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शन सेट जो आप किसी काम को करने के लिए भेजते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉन एडमिन यूज़र पासवर्ड चेंज करना चाहे, राइट, तो इस नॉन एडमिन यूज़र को खुद का पासवर्ड पता होना चाहिए चेंज करने के लिए भी. बट जो एडमिन यूज़र है, अगर इसे पासवर्ड चेंज करना है तो इसे खुद का पासवर्ड नहीं भी पता होना चाहिए, तो भी ये चेंज कर देगा. तो मतलब ये जो डिफरेंस है वो सिस्टम कॉल पे. सिस्टम कॉल का सेशन हमारा काफ़ी बाद में है, तो तब आपको बेटर समझ में आएगा. बाकी मैंने कोई बेसिक डिफरेंस नहीं बताया, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है. बैकग्राउंड नॉइज, बैकग्राउंड, एक सेकेंड, अगर बैकग्राउंड नॉइज है आई थिंक अभी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. एंड अब देख लेना, अभी नहीं, LKM इज नॉट द राइट टाइम. ओके, फाइन. सो एक और क्वेश्चन आई थिंक मैंने देखा कि फेडोरा 32 में एंड मौलिक saying how do you get the password of root account. मतलब आपको ओरिजिनल पासवर्ड चाहिए जो आप ऐसे रिकवर नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम यूज़ करनी पड़ेगी. एंड ठीक है, बाकी तो कोई क्वेश्चन है नहीं एज ऑफ नाउ. एनीवे, सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. आई थिंक फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर आपको पता होगा. मैं एक फाइल और इंट्रोड्यूस कर दूं. So in the next directory structure की हम बात करें तो we started with slash, under slash we know about home, okay, and also we know about root, we know about bin. That means we do understand about 3 directories under slash. home जहाँ पे सारे users के नाम के फोल्डर बने होंगे, राइट. रूट जहाँ पे रूट यूज़र का पूरा डेटा होगा, राइट. बिन जहाँ पे जनरली कमांड होंगी. ओके, मोर अबाउट वन मोर डायरेक्टरी जिसको हम बोलते हैं USR. यू नो, सिंस लॉन्ग, मतलब 1-2 साल 3 साल हो गए मान लो, दिस कमांड लोकेशन गॉट चेंज अंडर दिस. तो मतलब क्या है कि अब आपकी कोई भी कमांड है जनरली वो डायरेक्ट बिन में ना होके पहले स्लैश के अंदर USR फिर उसके अंदर बिन यहाँ होती है. तो इफ़ यू जस्ट ट्राई टू चेक इट, सो आई एम गोइंग देयर एंड आई एम ओपनिंग माय टर्मिनल एंड मैं कमांड का पाथ दिखाऊं फॉर एग्जांपल. सो ये छोटा सा डिफरेंस है, कभी कभी कोई कन्फ्यूज़न होता है लोगों को. सो इफ़ आई एम रनिंग लेट्स से डेट कमांड, ओके, तो इफ़ आई डू which and date, you can see here /USR bin date. तो that means if you type like this it will work. /bin में भी कमांड होती है, तो सॉरी /bin and date also working, right.
डिफरेंस पता पड़ेगा आगे, बट ओके. So now we are going to talk about two things in the next again. File and directory. ठीक है. डायरेक्टरी को हम काफ़ी बार फोल्डर भी बोलते हैं, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है, बट नो इश्यूज. फोल्डर भी बोलते हैं और फाइल तो फाइल होती है. डायरेक्टरी क्रिएशन वी हैव सीन that we can create this directory by using mkdir. तो हमने देखा था what is my current location, root. So if I want to create a directory under my current location, that means under root, so I just have to write the name hello. Okay, that is already present. Let me just create it by the name of brain. Okay, so इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ इस लोकेशन पे एक डायरेक्टरी हमने बना दी जिसका नाम है ब्रेन, राइट. वो ये रही. इफ़ यू वांट टू रिमूव डायरेक्टरी तो ब्रेन को लिखा, क्योंकि हमारी करंट लोकेशन वही है, तो आई डोंट हैव टू राइट इट. अदरवाइज लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ डायरेक्टरी अंडर usr bin और फाइन, तो आप क्या करोगे, आप पूरा पाथ भी लिख सकते हो, स्लैश देन usr देन bin यहाँ पे. या फिर इफ़ यू वांट टू क्रिएट अंडर स्लैश होम, लेट्स से एक यूज़र का नाम था फायर, उसके डेस्कटॉप पे कूल बना दिया, तो यू कैन ऑलवेज रेफर एन एब्सोल्यूट पाथ. अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, हमने कल डिस्कस किया था. दैट मीन्स इफ़ आई एम अ रूट यूज़र, आई कैन क्रिएट फाइल और फोल्डर फ्रॉम एनीवेयर बाई राइटिंग द इंटायर पाथ. और डिलीट भी करना है तो मैं ऐसे डिलीट कर दूंगा. ठीक है, बहुत ईजी है. नाउ ये डायरेक्टरी के बारे में हमने कुछ देख लिया था, तो आज आपको एक दो असाइनमेंट्स डायरेक्टरी के मिल जाएंगे. हमारा मेन टारगेट है फाइल के बारे में जानना. ओके, सो सबसे पहले लेट्स से इफ आई वांट टू क्रिएट अ फाइल, जनरली आई नीड अ टेक्स्ट एडिटर, राइट. जैसे कि हम विंडोज़ में भी फाइल बनाते हैं जनरली. सो अगर मैं बात करूं विंडोज़ में, तो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यू कैन क्रिएट फाइल बाय राइट क्लिक. कोई मेथड नहीं होता राइट क्लिक, बट इन जनरली फाइल में ऑपरेशन करना है तो हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए. इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, देन इन विंडोज़ वी हैव नोटपैड एज अ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर. But in any of the Linux flavor, in general, we have gedit as a text editor, right? So if I go and search under activity for gedit, see, I got this, right? Yeah. I can just write something and I can do save or Control S, and ये मैं लोकेशन पूछेगा. बाय डिफ़ॉल्ट ये होम डायरेक्टरी में सेव करता है, ok.txt, and closing it, right? So because I have just opened this text editor from root user, तो root user की जो होम डायरेक्टरी मतलब स्लैश रूट है, ये यहाँ पे सेव कर देगा. या you can browse this. The other way of creating a file is you can use touch command in Linux, and let's say a.txt. Okay, so file got created. Touch command is going to create an empty file. तो gedit से भी आप बना सकते हैं, जैसे नोटपैड से था, और आप टच कमांड से बना सकते हैं. तो इफ़ यू वांट टू डू फाइल क्रिएशन इन लिनक्स, तो आपके पास दोनों मेथड है, GUI दैट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड CLI कमांड यूज़र इंटरफेस. यहाँ से हमने बना दिया बाय यूजिंग gedit, और यहाँ बना दिया टच. ओके, या फिर आपके पास और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं लाइक VI, Vim, Nano, Pico, Emacs एंड many more, राइट. ये सारे क्या हैं, टेक्स्ट एडिटर. These are all except this is not a text editor, right?
सो ये हैं टेक्स्ट एडिटर ऑन कमांड लाइन, ठीक है। हम लोग VI, Vim, नैनो या पिको, Emacs में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास ग्राफिकल है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। टच कमांड क्या करती है, सिर्फ एक एम्प्टी फाइल बनाती है, राइट, एम्प्टी फाइल। तो आई जस्ट कैन क्रिएट इट। इवन इफ आई वांट टू क्रिएट मोर देन वन hi.txt, तो ये एक से ज़्यादा भी बन जाएगा। Even if you want to create number of files, let's say, okay, then this curly braces 1 to 50.txt, तो लगभग आपके पास 50 फाइल्स बन गई। Okay, so this for loop kind of thing that we also used in mkdir command, तो ये यहाँ पे भी काम कर रही है। Alright, now if you want to remove a file, then rm space file name and removed. Okay, if you want to remove more than one file, you can keep writing the names, let's say this or maybe any file. But see, once you hit enter, it is generally asking for question mark. If I type no, it will not remove. Okay, if I type yes, it will remove. For example, right now, if I want to remove all the files related to OK.txt, it is going to ask me yes, no, 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 like this. It is a very complex job to give the answer every time. So if I want to remove every file, I can always supply -f. Fine. -f for forcefully I am saying yes to remove, job done. Okay, but it is not giving me any kind of visual effect. So if I'm creating all the file again, I can see here, then I'll use remove command. I'm also gonna use -v option. Okay, remove, and V for verbose means I want to see the removal process. So you will be having this output, right? So मतलब ये है कि आप remove command के साथ जिस टाइप का भी ऑप्शन लगाना चाहते हैं, like -f और -v, there is no difference कि आप f और v को एक साथ भी लिख सकते हैं like this, या फिर आप V और F लिख सकते हैं। सो इसके ऑर्डर में एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली दैट्स इट। तो ये हमने फाइल बना भी दी, फाइल रिमूव भी कर दी एंड काम भी कर दिया। ओके, नाउ there is one very important concept in file removal process. So someday what we'll be doing, will create our own remove process. So I really want to work, or I really want to introduce a remove process. You can say remove or you can say delete process. Okay, so this is a tip from my side. What is that tip? If you are having a file, right, if you have a file, then it doesn't matter either the file is empty or not empty. Okay, as a user you can remove it. If the file is empty or not empty, you can remove it always. But in case of directory means folder, if the directory is empty, right, you can remove it. If directory is not empty, right, directory is not empty, then in this word there is no method of deleting this folder. That means इसका मतलब ये है कि अगर एक फोल्डर खाली है तब तो आप रिमूव कर सकते हो, बट एक फोल्डर खाली नहीं है तो आप उसे लाइफ में कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, राइट। For deletion of a directory, it is a mandatory rule to empty that directory first, ठीक है।
मैं आपको ऐसे नॉर्मल दिखाता हूँ. लेट्स से okay, not in Mac, going back to Fedora. Okay, if I am creating a file, let's say directory mkdir h1, okay, and that's fine. I'm going to remove the directory by rmdir command like this. Remove. There is nothing like that. If I'm creating directory h1 and I can see h1 is here. If I want to create some more directory under h1, what I can do, I can go to h1 and then I can create here like h2. तो मैंने क्या किया, h1 के अंदर गया और h2 बना दी. फाइन. अब h2 यहाँ पे है. आई एम जस्ट कमिंग बैक. अगर मुझे एक स्टेप पहले आना है तो cd space dot dot. Now here I can see h1 is here. So if I do ls h1, I can see h2 is here. If I try to remove h1 now, not possible. And the answer you get, you cannot delete this directory because directory is not empty. ठीक है, मतलब ये दुनिया में रूल है तो है, डायरेक्टरी जब तक empty नहीं होगी तो डिलीट नहीं हो सकती. इसका ओरिजिनल मीनिंग ये भी है कि अगर आपको एक भरी हुई डायरेक्टरी रिमूव करनी है, let's say if this is a directory called h1, अंदर आपके पास 5 कंटेंट है, 1 2 3 4 5. So as a user, even you are deleting a file or directory graphically, तो पहले ये 1 2 3 4 5 इन सबको डिलीट करेगा. जब फाइनली डायरेक्टरी खाली हो गई तो फिर ये प्रोसेस इसे डिलीट कर देगा. By any chance, if any of the file or folder inside this main folder is not deleting, you are now, I mean, it's impossible to delete the directory. So content must be deleted first. Okay, so the removal process is designed in such a way. Okay, so ये आपको समझ में आ रहा है. किसी ने कुछ आंसर दिया है, उसका आंसर मैं देता हूं कि वो क्या हो रहा है. राइट. सो पहली बात तो ये बात समझ में आई कि जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टरी कभी भी रिमूव नहीं हो सकती अगर वो खाली नहीं है तो. राइट. सो ये जो मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन दिया, डायरेक्टरी जब भी रिमूव करनी है तो आपको इनसाइड कंटेंट को उड़ाना पड़ेगा. राइट. रिकर्सिवली डिलीशन का मतलब मैं लेके आता हूँ. हर्ष या आशिफ या विक्रम, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा है अभी. बट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, राइट, yes Vikram, -f for forcing avoid question, yes and no. Fine. अब जिसके पहले मुझे इसका आंसर दे दो कि ये बात समझ में आ गई कि आपको एम्प्टी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही डिलीट हो सकता है. इसी कॉन्सेप्ट पे बाकी सब चीज़ें चलेंगी. या राइट. ओके, गुड. सो सम पीपल आर सेइंग कि अगर हम लोग डायरेक्टरी रिमूव करना चाहते हैं तो सी द पॉइंट इज, इफ आई वांट टू डिलीट अ डायरेक्टरी तो डिफॉल्ट कमांड क्या है, मतलब ये बात आप समझने की कोशिश करना. ऐसा नहीं गूगल से पढ़ के बस देख लेना है. इफ आई एम डिलीटिंग दिस डायरेक्टरी कॉल्ड h1 बाय डायरेक्टरी डिलीशन कमांड, इट इज ट्राइंग टू से कि डायरेक्टरी एम्प्टी ही नहीं है. जो मैंने बताया कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं होगी तो नहीं डिलीट कर सकते. बट इफ आई ट्राई टू डू rm with h1, ओके, मतलब अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम कनेक्टिंग टू रिमूव कमांड एंड आस्किंग फॉर डिलीशन. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इफ यू यूज rm command is generally got created for removing a file, not a directory, a file. ठीक है. तो अगर मैंने बिना कुछ आर्ग्यूमेंट पास किए rm से बोला कि कैन यू ट्राई, राइट, आपको इतना माइनर लेवल पे सीखना है कि आप ये बना पाओ फ्यूचर में. सी, लुक एट द एरर.
a developer always needs to read an error, sorry. So rmdir h1, तो इसने आंसर क्या दिया, directory is not empty. That means what I explained earlier, it is not possible to remove a directory if it is not empty. When I tried the same with rm, तो rm ने भी बहुत genuine आंसर दिया है, h1 cannot remove because it's a directory. तो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्टरी ये रही और फाइल ये रही. फाइल, if you want to delete a directory you have a command or program called rmdir. if you want to remove a file, this is rm. तो जब मैं rm से इसे डिलीट करने के लिए बोल रहा हूं तो ये क्या बोल रही है, दिस इज अ डायरेक्टरी, क्योंकि rm कमांड का काम ही क्या है, फाइल रिमूव करना. ओके, ये बात क्लियर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टरी तो कभी डिलीट हो ही नहीं सकती, राइट. तो कुछ लोगों ने एक आंसर दिया है कि अगर आप सर rm के साथ -f ऑप्शन लगा दो, v लगा दो, तो ये डिलीट हो जाएगी. आई थिंक शायद आंसर यही दिया था आपने, देखना पड़ेगा मुझे ऊपर जाके. rm-r किसी ने बोला है, किसी ने -rf बोला है, ठीक है. किसी ने बोला कि सर यदि आप rm के साथ -r और f लगा दो तो ये डिलीट हो जाएगी. बिल्कुल सही बात. लेकिन हमें लाइफ में आज के बाद मैजिक नहीं चाहिए कि rm के साथ हमने f लगा दिया तो ये इसने डायरेक्टरी को डिलीट कर दी. बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टरी डिलीट तो हो गई, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. मतलब जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं हुआ. द रीजन इज बिकॉज when you did rm-rf and h1, तो पता क्या हुआ, फर्स्ट rm कमांड कॉल टू cd, कि ऐसा समझने के लिए cd कि इसके अंदर कुछ कंटेंट है, आई एम नॉट एबल टू डू दैट. सो ये cd कमांड से की हेल्प से h1 के पास गई और यहाँ से h2 को रिमूव कर दिया. उसके बाद इसने वापस cd से बोला एक स्टेप बैक, rm कमांड वापस यहाँ आई. फिर rm कमांड ने क्या बोला कि आप एक काम करो, अब तो ये डायरेक्टरी खाली हो गई है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं. मतलब क्या हुआ, what rf is doing, it is browsing this directory and checking the data and deleting inside the content, and then when every content of a directory got deleted, it deleted the final one. मतलब ये है जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले ऊपर कि अगर आपको भी डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो पहले अंदर का कंटेंट खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिलीट हो सकती है. इसका मतलब ये भी मैंने कहा कि अगर कोई एक डेटा जो डिलीट नहीं हो रहा तो आप ये कमांड भी ट्राई करोगे rm-rf वाला तो भी डिलीट नहीं होगा. इसको देखें कैसे. इफ आई वांट टू क्रॉस चेक इट, लेट्स से आई एम गोना क्रिएट mkdir h1 and h1 के अंदर h2, फाइन. इफ आई एम जस्ट शोइंग यू h1 के अंदर ये है. अब मैं rm के साथ rf तो लगा ही रहा हूँ, साथ में v भी लगा रहा हूँ और h1 को देता हूँ. देखना क्या होगा. what happened, first removed h2 directory under, अभी ऐसा क्यों दिखा रहा है, h1 के अंदर h2 रिमूव हुई, मतलब rm कमांड अंदर गई, उसे रिमूव किया, वापस बाहर आई and deleted h1. Okay, but if you put some content under h1 directory that is not deletable, rm command cannot do that. So reality is you have to remove the content first. Okay, so yes Ayushi, I'm coming to your point also. Okay. Oh,
दैट इज़ वंडरफुल। दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बट जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर ये आपको सब समझ में आ गया है तो यस बोलो कि मैंने कहा था कि जो भी होगा पहले डायरेक्टरी एम्प्टी करनी पड़ेगी, एंड आई हैव शोड यू द सेम थिंग। उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू आर very much understanding that point, just say yes in the chat window. Rest I'm going to answer the question of Ayushi and Siddharth, right? So give your response in the chat window if you are understanding the directory deletion process. All right, wonderful, that is great. So coming back to the question, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, राइट, जस्ट लिटिल वाइल, राइट, RMDIR command got created to delete a directory, right, and RM command is only created to delete a file. So how RM is deleting that one? Okay, actually ऐसा कभी हुआ ही नहीं, RM ने फाइल ही डिलीट की, because the most amazing thing about Linux or any operating system, in Linux everything is a file. That means you name about anything, everything is a file. That means there are number of categories. इसका मतलब क्या हुआ, फाइल भी फाइल है, डायरेक्टरी भी फाइल है, हार्ड डिस्क भी फाइल है, कैमरा भी फाइल है, रैम भी फाइल है, CPU भी फाइल है। तो द नेक्स्ट कर्नल डिज़ाइन इन सच अ वे कि सब कुछ फाइल ही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब कुछ फाइल है तो आपके लिए आ गए दो क्वेश्चन। कौन से दो? जिसने इसका आंसर दिया, रियली मतलब मेरी तरफ से बहुत सारे गिफ्ट है उसके लिए। क्या आप डायरेक्टरी में लिख सकते हो, जैसे हेलो वर्ड ऐसा कुछ, या उल्टा क्या फाइल के अंदर फोल्डर बना सकते हो या फोल्डर स्टोर कर सकते हो? इसके आंसर अगर आपने निकाल लिए, इसमें से किसी एक का आंसर तो मैं आपको दे दूंगा। मतलब फाइल आपके पास जो है लाइक a.txt, अंडर दिस फाइल आई कैन स्टोर मूवी, फोल्डर, चिप, इन एनीथिंग, आई कैन स्टोर एनीथिंग अंडर दिस फाइल, राइट। सो आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो ये है। तो लिनक्स में एवरीथिंग इज फाइल। व्हेन एवरीथिंग इज अ फाइल, RM command is converting that directory type into file type and then it is removing it, right? So question मैं repeat कर देता हूँ वापस। आपके लिए question क्या है? Let's say this is a directory D1. You have to write something here like hello world. Okay? Let's say there is another file called a.txt. You have to create a folder called h1 and also store a movie called abc.mp4. सब कुछ यहाँ स्टोर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको काफ़ी सारा टाइम लग सकता है एंड काफ़ी कुछ रिसर्च लगने वाली है, राइट। इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, वो डिपेंड करता है वोटिंग पे, राइट। Then Ashif is asking, so then why RMDIR command is there? Because if you have directory, you want to delete it. अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको किसी ऐसे नॉर्मल, ये प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैंने क्वेश्चन पूछा, ये किसी बुक या किसी ब्लॉग पे नहीं मिलने वाला, राइट। ये कर्नल का इंटरनल डिज़ाइन है। बिकॉज ऐसे मान लो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय अ टेक्निकल यूज़र, अ नॉन टेक्निकल यूज़र ऑल्सो। सो दिस कॉम्प्लेक्सिटी कैन नॉट बी
come in further when you use operating system. तो अगर कोई नॉन टेक्निकल यूजर्स को बोलोगे कि सब फाइल है, इट्स लाइक सब मोह माया है, so there will be complexity. No, because the statement I have given, this is the internal of Linux. लेकिन एक यूज़र के लिए वो चीज़ वैसे ही प्रेजेंट होगी जैसे यूज़र देखना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज, थोड़ा सा क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट को किसी और तरीके से लिया. इन एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज अ टू काइंड ऑफ स्पेस. द वन इज यूज़र स्पेस, जिसे बोलते हैं मोह माया, राइट. दैट मीन्स फॉर अ यूज़र, फाइल को वो अलग तरीके से देखता है, फोल्डर को अलग तरीके से देखता है, हार्ड डिस्क को अलग तरीके से देखता है, कैमरे को अलग तरीके से देखता है. इसको बोलते हैं यूज़र स्पेस. बट द सेकेंड थिंग दैट इज कर्नल स्पेस, राइट. व्हेन यू टॉक अबाउट कर्नल स्पेस, हियर एवरीथिंग इज अ फाइल. जैसे मान लो ये हमारी दुनिया पृथ्वी है. इंसानों ने अलग अलग टाइप के रोल्स अलग अलग लोगों के लिए बना रखे हैं. बट जब वो पृथ्वी लोक से मर के पाताल लोक या नर्क लोक या स्वर्ग में जाते हैं तो यहाँ पे हैं भगवान, राइट. फॉर भगवान एवरी स्पीशीज इज द सेम. जो आपने कर्म किए होंगे वो अलग बात है, लेकिन सबके लिए एक बराबर. तो कर्नल स्पेस इज हैंडलिंग एवरीथिंग एज अ फाइल. तो अगर आप यूज़र की नज़र से देखोगे तो आपको मोह माया ऐसे दिखेगी. बट आप अपने आप को कन्वर्ट करो और ले आओ कर्नल पे. सो व्हेन द कर्नल वाज डिजाइन इन लिनक्स, एवरीथिंग इज अ फाइल. दैट मीन्स लिनक्स हैज़ 7 टाइप्स ऑफ फाइल. ये हम बात करेंगे कभी, 7 टाइप ऑफ फाइल. उन 7 टाइप में से एक डायरेक्टरी भी फाइल है. सो दैट मीन्स अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ लिनक्स हैज़ 7 टाइप्स ऑफ फाइल, तो उसमें से रेगुलर फाइल, जिस फाइल को आप फाइल बोलते हो, डायरेक्टरी, राइट, एंड 5 मोर. ठीक है, उनके बारे में अभी आप नहीं जानते तो अभी छोड़ दो, बट 5 मोर. तो दैट मीन्स फ्रॉम वेयर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट डज मैटर. इससे आप बोलो कि आरएम कमांड क्यों बनाई गई, RMDI क्यों बनाई गई, क्योंकि यूज़र को डिफ्रेंशिएशन दिखाना पड़ेगा. बट व्हेन वी आर लर्निंग लिनक्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द स्पेसेस. ठीक है, तो जो मैंने डिस्कशन दिया वो कर्नल स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में था. ऑलराइट, सो ओके, थोड़ा सा इसको समराइज कर दो. अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आई थिंक आनंदिता या आयुषी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा, राइट. विक्रम ने एक और बात बोली है, व्हेन वी डू CD, तो वो यूजर स्पेस की बात है. सी, नेम डजंट मैटर, राइट. एक बार आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज, बिकॉज अगर आप लोग ही नहीं समझेंगे तो मैं पढ़ा किसको रहा हूँ. सिंपल सी बात यह है कि यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस, देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. वी हैव अ टाइम जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप इसे ऐसे सोच सकते हैं. ओके, वंडरफुल. रही बात किसी के भी एक और बहुत माइंड में कंफ्यूजन रहता है, आई हैव सीन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. वो है बहुत बड़ी चिंता दुनिया की, वो है एक्सटेंशन, राइट. एक्सटेंशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा एक फाइल का नाम एक ऑब्जेक्ट का नाम a.txt है, तो 99.99% लोगों के दिमाग में ऐसा ही आएगा कि ये टेक्स्ट फाइल ही है. यही तो है जो आप समझ नहीं पाए. मतलब इफ यू टॉक अबाउट द कर्नल स्पेस, कर्नल नेवर सेड दैट यू शुड नेम अ फाइल लाइक दिस.
or kernel never say that you should name a file like this. So for example, agar, what the hell, if I'm going to create a directory named Ashutoshh, right, and willingly I'm putting it .txt, किसी के बाप का कुछ नहीं जाएगा, right? मतलब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टरी बुरा मान जाएगी if you are giving a directory name like .txt. See, so right here ashutosh.txt, किसी ने बुरा नहीं माना, and now you do cd ashutosh.txt, and that's it. So extension is a very much kind of confusing thing, but why extension got created, इसकी एक अलग से सेशन है मेरे दिमाग में कि कब लेना है और क्यों लेना है. एक्सटेंशन का मतलब अगेन यूज़र स्पेस के लिए है, कर्नल स्पेस के लिए कोई मतलब नहीं होता एक्सटेंशन का. आप किसी फाइल का नाम दो, फोल्डर का नाम दो, या किसी का भी नाम दो, डजंट मैटर, राइट. सो सिंपली राइट हियर, ओके, क्योंकि ऐसे तो आप बोलते हैं ls कमांड से कि ये तो एक फाइल है भाई. OK.txt is also a file and ashutosh.txt also file. I mean, how do you identify ashutosh.txt is a file? देखने में तो ये लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, राइट. सो कोई बुरा नहीं मानेगा अगर आप नाम किसी को किसी का दे देते हो तो. हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि कलर का कोई इशू है तो मैं आपकी ज़िंदगी से रंग थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, alias ls, and now everything is same. ठीक है. Now OK.txt, this everything is seems like a file. So ऑपरेटिंग सिस्टम में कलर भी थोड़ा कमांड में इनबिल्ट होता है कि क्या कब दिखाना है, डजंट मैटर. बट होपफुली आप ये समझ रहे होंगे कि एक्सटेंशन से एज सच कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कर्नल को, राइट. सो अविनाश इज आस्किंग हाउ टू एक्सेस कर्नल स्पेस. अविनाश, इसका आंसर अगर मैं अभी एक बाबा के टर्म्स में दूं तो बाबा बोलेंगे कि आप अपनी आत्मा को कैसे एक्सेस करोगे, लाइक दैट. बट आई विल गिव यू दैट टाइम कि हम कर्नल स्पेस को कैसे एक्सेस करें, ठीक है. एनीवे, तो उस पॉइंट पे है कभी बात, लेकिन ये थोड़ी सी बात थी, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है. तो थोड़ा सा डिस्कशन था. अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉपी एंड कॉपी प्रोसेस, ठीक है. सो अगेन, कॉपी प्रोसेस फॉर अ फाइल और फॉर अ डायरेक्टरी, जिसके लिए भी आप करेंगे. सो इन शॉर्ट, कॉपी इज रिवर्स ऑफ रिमूव. इसका मतलब ये होता है कि जो कॉपी प्रोसेस होता है, कॉपी करना, दैट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ रिमूव. हाउ? ओके, सो इफ आई गो टू रिमूव प्रोसेस अगेन, मतलब मुझे कुछ डिलीट करना है, एंड इफ आई वांट टू रिमूव अ फाइल, सो फाइल इज हैविंग सम कंटेंट. ओके, if I remove this file directly, you know what, first file will be opened and all the content will be empty, then finally file will be deleted. Okay, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके पास एक फाइल 1 KB की है और एक फाइल 10 GB की है, तो अगर आप दोनों के रिमूव प्रोसेस का टाइम देखोगे तो इसका टाइम कम आएगा, इसका टाइम ज़्यादा आएगा, राइट. So if you delete something, first it will be empty by the operating system process. When the file will be empty, then it will be deleted. Directory के बारे में भी मैंने यही बताया था. First of all, if it is a directory, then the remove process will remove all the content under directory and finally remove it. Okay. Again, if you talk about copy process similarly, for example, I have a file called a.txt and here is some content.
Okay, as a user, if I want to copy this folder file to some other location, so what will be happen? First, an empty file will be created here, मतलब पहले एक खाली फाइल यहाँ पे बन जाएगी इसी नाम से या किसी और नाम से भी, and then data will be copied one by one. रिमूव में क्या था? पहले कंटेंट रिमूव होता था, फिर बाद में फाइल. कॉपी में क्या हो रहा है? पहले खाली फाइल यहाँ बनेगी, राइट, एंड फिर कंटेंट वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जाता रहेगा. सेम फॉर डायरेक्टरी. इफ यू हैव अ डायरेक्टरी, लेट्स से D1, and you have a number of data here present, so when you copy this, first of all इस लोकेशन पे इसी नाम से या किसी और नाम से भी खाली डायरेक्टरी बनेगी, फिर डेटा वन बाय वन जाता रहेगा. ओके, तो इससे मैंने बोला कि जो रिमूव है वो कॉपी का उल्टा है या कॉपी रिमूव का उल्टा है. मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ? वैसे तो बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, बट someday I'll give you some Python program or code or maybe Go language code. मेरा टारगेट है Go पे भी आने का. So I'll give you the assignment to write your own remove and copy process. तो आपको उस दिन कोड करना है remove और copy process को, right? So if this discussion is very much fruitful and very much understood to you, then say yes in the chat window कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा. ओके, सो ऑलराइट, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. ओके, वंडरफुल. सो माय पॉइंट इज यू हैव टू थिंक थिंग्स डिफरेंटली. मतलब सब कुछ एक कर्नल स्पेस या ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र से सोचना है, राइट? ओके, वंडरफुल. एक और बात है, आई एम यूजिंग अ मिक्स लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, तो पॉसिबली इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी. पता पड़े कोई हिंदी नहीं समझता या कोई इंग्लिश नहीं समझता. आई थिंक हम इंडियंस हैं तो वी ऑल कैन मैनेज एनी लैंग्वेज. एनीवे, वंडरफुल. सो this is something. How do I copy? So simply, so to copy a file or folder, I'm gonna use the same way. So first of all, I'm going to use copy process. So let's say, what is my current location /root, and I have a file called ok.txt. So I'll use copy the name of file. You don't have to write any path if you are already there, right? Copy ok.txt, and then the destination where you want to paste. Let's say I want to paste under /home. So when you hit /home as a destination, this is a source and destination. So this file will be created and the content will be copied. Enter, done. Okay, you can cross check by home. ok.txt is here. What if you want to copy this file with a different name? So let's say me.txt. So what happened? This me.txt file will be created and the content will be copied. तो मतलब you can copy the file with the same name if you don't write anything, but if you're writing something, it will create with that name me.txt. ठीक है, ये फाइल की बात हो गई. ओके, व्हाट अबाउट डायरेक्टरी? सो इन जनरल, इफ I have a directory called, let me just delete it, terminal, and here I'm going to have this. Okay, if I want to copy this folder, see, let me check, it is empty. Yes, it is. Copy, fine, and I want to paste under /home again, not home. This time I'm giving a TMP location. Okay, let me give you some idea about TMP. So the new directory in Linux that I'm telling you is TMP. So, oh my god, what happened?
fine. So I think anyway, just creating it. So we know the slash, and under slash we have tmp folder. No, okay, I'll just fix it because it is I think having a lot of, पता नहीं कैसे हुआ ये, ठीक है देख लूँगा. tmp is a location where everything will be present till the system is running. So I'm copying it here. So cp command is not copying find directory to there. What you have to do, cp and -r, then find folder name and where you want to paste it, tmp, enter. If I check the tmp, find is here. Okay, so if you want to copy a directory, you have to write -r option, because you are asking copy command to treat this as a file and copy it. Okay, तो ये डायरेक्टरी को कॉपी करने की चीज़ है. ये हमारा हो गया कॉपी प्रोसेस. ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा. नाउ सिमिलरली वन मोर फाइनल कमांड, that is rename. So I'm just creating a terminal here and rename. Fine. You know what, but before rename, want to discuss one more thing, that is cut paste. Cut and paste. How you do cut paste from command line? So let's say if you have this file and you want to cut it from there, so move ok.txt, let's say /tmp. So what happened now, this move ok.txt is not present here, but if you check /tmp, it is there. Okay, there is no difference between moving a file or folder from this place to another. So if I cut the folder and paste it somewhere, so it will paste, right? See, find is not present here. So that is your move command is for cut and paste. Cut and paste. Fine. Now the next and the final operation for the basic command is rename. You know what? Like I have given some new ideas about the copy, remove, user space and kernel space. But when you talk about rename, in this word, there is nothing like remove. मतलब ये है कि rename. Rename जैसा कुछ होता ही नहीं, right? कुछ भी नहीं, rename बना ही नहीं कभी आज तक. You know what? The reality of rename is cut and paste. That means rename सिर्फ कट पेस्ट. बस कट पेस्ट में क्या होता है कि आप ऐसे दिखाता हूँ. What is कट पेस्ट? कट पेस्ट में क्या होता है, आपने एक फोल्डर को यहाँ से राइट क्लिक किया, कट किया, किसी और जगह पे जाके पेस्ट कर दिया. That is कट पेस्ट. But इन rename आपने इस फोल्डर को इसी जगह से कट किया और इसी जगह किसी और नाम से पेस्ट कर दिया. ठीक है, मतलब कट में क्या होता है, rename में क्या होता है, इसी फोल्डर को इसी जगह से डिलीट किया, मतलब कट किया और इसी जगह पे वापस किसी और नाम से पेस्ट कर दिया. सी, तो अगर आप लिनक्स कमांड लाइन की बात करेंगे तो जो मूव कमांड है वही रिनेम करती है. सी, इफ आई वांट टू रिनेम दिस म्यूजिक फोल्डर और ओके फोल्डर, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मूव, आप ओके को मूव कर दो नॉट ओके में. सी व्हाट हैपन, ओके नहीं. तो अगेन याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है. रिनेम जैसा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में. इसी फोल्डर को यहीं से कट किया और इसी जगह पे पेस्ट किया किसी और नाम से. दैट इज रिनेम. ओके, सो
सब कुछ कट पेस्ट है, रिनेम उनेम कुछ नहीं होता। यदि आप इस बात से सहमत हैं, राइट, तो बिल्कुल फटाफट यस मैसेज टाइप करें, एंड सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फाइन, so just give me yes and no. Okay, great, wonderful. ये सारी बातें याद रखना जब हम लोग इंटरव्यू लेंगे या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे. सो दिस थिंग्स विल बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल. ऑलराइट, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, ये कैसे वापस आएगा? छोटा 11%. No, shit, I don't have to just make this browser bigger. कुछ तो होता होगा जो ये बड़ा हो. Okay, so the next thing we are going to talk about is something else. मैं एक दूसरा खोल देता हूँ यार. App. Okay, fine. So next thing we are going to talk about, that is VI editor. VI या Vim को बस फटाफट एक मिनट में ख़त्म करता हूँ. See, sometimes if you don't have GUI in your Linux, मतलब कभी कभी क्या होता है किसी कंपनी में आपको ग्राफिकली नहीं मिलता Linux. So at that point of time, how you edit and write data in a file? So you can use VI, Vim or Nano. ये तीनों. So VI, Vim तो common है. So we are going to use Vim and Nano to, and they can, you know, do all the operations. They can create file, edit file, remove the content, everything. So first of all, I'm starting with Nano. Okay. So let's say if I want to create a file from command line, graphically तो हमने देखा है gedit से. So what I'll do, I'll use nano command, and let's say I want to create under tmp, या path नहीं देंगे तो current location पे बनेगी hello.txt. Okay, once I hit enter, you can start writing, hi, this is me and all good till now. Okay, that's it. What if you want to save this file? See, here the terminology and the shortcuts are written. If you use Control O, यहाँ पे देखो लिखा है, तो it will write the data. So if I'm using Control O, it is asking for file name, and मैंने enter किया और save हो गया. And now if you want to come out, exit करना है तो Control X, save the buffer, yes, type Y and enter, you come out. So Control O for Nano, Control plus O to save, and Control X to exit. The same concept we are using in, you know, gedit also. मतलब यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है लोगों को, पर ये होता है graphical भी. See how? If I open gedit text editor, gedit, in this text editor also, if I write something, I have to press save button or Control S. When I hit Control S, it is asking for file name. I'm giving okay dot maybe i.txt, and then I'm hitting on the save button. But the file is not getting closed. So मुझे इसे अलग से close करना पड़ता है. मतलब पहले इसको save करो, फिर इसे close करो. Similar यहाँ भी, right? If I open a file, a new file, let's say, so I'm writing something, पहले मुझे save करना पड़ेगा. Control O, file का नाम पूछा, enter किया. Then Control X, save, right? Similar. So Nano is very very easy to
to use Control O for save, Control X for edit. But when you talk about text editors, okay, when you talk about text editor, Vim is the most powerful text editor ever. Most powerful. So when I say powerful, this text editor having a lot of features. So the reason behind popularity of Vim is its features. We'll talk about features later on, but let's say if I want to create a file by Vim, so I'm going to use Vim no.txt. Once I hit enter, okay, if Vim is not there, Fedora is going to detect it and it is going to install it automatically. You just hit Y button, okay, and make sure there is internet connectivity. So by default in Fedora 32, Vim editor is not there. Okay, look at the beauty of Fedora. The command was not present and it is connecting. देखो install भी हो गया और Vim से खुल भी गया. How beautiful, right? वापस दिखाता हूँ. See, so how you have to, create a file with Vim. VirtualBox running. यार ये गया कहाँ? No. Okay, I'm showing you here in this one. So see, this is my MacBook and here also we have Vim editor. So if I'll use Vim, let me just make it bigger, even much bigger. Okay, if I use Vim under /tmp, I want to create a file a.txt. What I'll do, I'll hit enter. By default I cannot write, so I have to press I button. So let me just come here. Okay, so I'm using Vim or vi both. Then the file name. By default I cannot write, I have to press I to instruct to request to Vim editor, yes I want to write. Here I stand for insert, so I have to press I here. That I'm doing. When I press I, look at the text editor, it is showing that it is in insert mode, right? So simply it is in insert mode. Now I can start writing the way I want. When I want to come out of insert, right, I have to press escape button, right, to come out from insert mode. So I'm just pressing escape button. Then I want to say something to Vim. After escape I have to press colon. Colon is something that you want to connect with the Atma of Vim. Okay, and here you can write couple of information, let's say saving file or not saving file, but at least you have to write colon. See, in the last, right, it will be written in the last. Then if I want to save and exit, I need to press WQ, means save exit. So, and if I'm not in insert mode, I don't have to press escape, then colon WQ. Or instead of colon WQ, I can use colon X also. Okay, or if I am writing something, I have to come out of insert mode, I can use shift ZZ. So how I can save that? After pressing escape, I can use shift ZZ, right?
This is also a shortcut to after saving you want to come out. Okay, so this is very short information about your Vim. Alright, wonderful. तो आपको नैनो और VI और Vim Prashant is asking, okay, lot of questions. Yes, Prashant, it is possible. You can configure your operating system in either only GUI mode or only command line mode. Yes, there is, Harsh, there is software, but I don't like it much. Fine. So okay, अभी सब समझ में आ रहा है? No rhythm. VI and Vim are not having exactly same features. A couple of people are thinking that VI and Vim are having same features, but no. So there are a number of difference in VI and Vim. The one I can tell you, Vim has a feature called encryption. Okay, by using Vim you can manage multiple files. Means you can open 2 or 3 files in one shot. So Vim also support encryption to encrypt the data. So let's say if I want to encrypt this file, I can use -x. I need to type some password 1234, enter, 1234, enter, and once I write something, I'm just coming out and saving it. This file cannot be read because when I use -x with Vim, it is encrypting that data. Let's say if I open it by cat or any other command, see, you cannot read that file from outside until unless you're not using X to decrypt it. Okay, so this is something that you can also compare. Okay, one final command of today's session. Okay, from tomorrow onwards, we will be starting the shell part. I planned it today, but because number of commands are there, so shell, I don't think, I'm not sure about tomorrow session, but if it is not, then we'll talk about day after tomorrow, right? So, but one more thing, how we are going to view a file content. Okay, so if I want to open a file, I can use text editor, or let's say I'm using temp hi.txt. I'm writing something, hello world, let me just, hello world, this is me, hi, and some data. Let me just make a copy and 10 line paste, copy and 10 line paste. Okay, this is my file. If I want to just open it, we can use cat command just to open the file. I cannot edit by cat, but I can open it. Okay, so cat command is to just show you the content written inside file. Remember, cat command is not an editor, it's a viewer. We can view the file. Cat is having number of features, like you can also use -n
to check the content in the line number format. Okay, so you can always use that. Alright, so I'm opening the file again, tmp hi.txt, and deleting all these content. Okay, so one more thing about cat command. So tmp hi.txt. See, but what if I want to reverse the order of file? For example, the last line will be the first and first will be last. I mean, I want to reverse the order of lines. So इसमें क्या होगा, cat का उल्टा क्या होता है, tac, tag, right? Cat का उल्टा tag, then the name of file. By chance Mac is not having this command, but if I use in my Linux, क्या हो गया यार, ये कहाँ गया भाई मेरे, I don't know, no, not in OPS, what the hell. ठीक है, तो आप एक बार चाहे तो देख लेना, नहीं तो what I'm doing, let me just shut it down and reopen it. ऐसा होता नहीं है जनरली. Fine, and I'm starting it again. Alright, so cat का उल्टा क्या होता है, tag. Tag will give you the last line to first line in a reverse order. अगर यहाँ पे tag install हो सकता है, लग तो नहीं रहा, but let's check. शायद. In Mac we have a brew to install things, so just check अगर कुछ ऐसा मिलता है तो. Meanwhile this Fedora is booting. Okay, so alright, not available the name of tag. Okay, so it's trying to search on GitHub and many more things, but it is not finding it. Okay, anyway, so I'm just logging to my root user again and the password. Alright, so simply switching it back. यार ये कहाँ चला गया? That means I'm not able to figure out what the hell. किसी को आइडिया है, मतलब ये वर्चुअल बॉक्स मिनिमाइज क्यों हो गया? Desktop icon, no, any idea? नहीं है. I don't know where is that. Wow.
What a wonderful. रूठ गया, मैक भी रूठ गया यार. Anyway, तो दोस्तों और उनकी दोस्तिकाओं, तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है फिर. Because I need to check it. I'm seeing this on very non-human behavior. Okay. Anyway, एक ऑनलाइन लिनक्स है, शायद यहाँ पे कमांड हो cb.vu. So this is a Linux box and I believe अगर ये कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे for example, right, sorry, date and what the hell, fine. यहाँ पे शायद Vim डिलीट बटन ही काम नहीं कर रहा है इसका तो. Okay, if I try to hit enter, Vim is not found, date is there, tag is not there, cat ओके नहीं है, कहीं कमांड ही नहीं. ठीक है, आप ट्राई करना आपके फिल्डर पे टैग कमांड जो इसे रिवर्स ऑर्डर में देगी. ओके, सो टेल हेड यूज करेंगे कभी. ओके गाइस, बाय बाय, हैव फन. काटा कोडा भी यूज कर सकते हैं बट काटा कोडा में चलो देख लेते हैं. काटा कोडा में काटा कोडा right, so this is a kata coda and here if I go down and is there any Linux get Visual Studio, I can use any of the start Linux operating system, learn CentOS and explore playground, start this scenario. Okay, देखते हैं. सिर्फ cat command is there but do we have tag command? Okay, cool, present. See, what I'm going to do is I'm going to create vim a.txt and let's say hello world, hi, my name is Khan. No Khan, sorry. Okay, fine, ding ding ding. Now if I use cat command and I use tag now a.txt, see the bottom line is shifted to up and up line shifted to bottom. So cat का उल्टा क्या होता है? tag. So ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, right? So अबे रुको यार, पहले से बाय बोल दिया सबने. Right? One more thing, if you want to have the content in a reverse order, मतलब कि आपको पूरा content ही उल्टा करना है तो आप rev command यूज कर दें a.txt. it will show you everything in a reverse way. See, hello world, then something. Okay, अब आप बाय बोल सकते हैं. So thank you so much now and bye bye, have fun. Okay, great. So about tomorrow session,